Listen up. One thing you need to remember in benzene is the preparation of benzene 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is N-hexane. N-hexane, if you treat that with Al2O3 and Cr2O3, which we have studied in alkenes also, this will turn out to become benzene. Or N-heptane loge. So if we take it as N-heptane, then we will get toluene. The same reaction, but we'll get toluene. Yeah. Next reaction is with cycloalkenes. Like if you have alkene like this, or if we get this way, okay, isolated dienes or conjugated dienes. In any form, if you react that with selenium and heat or platinum and heat, we will end up getting benzene. ये बहुत यूज होएगा, बहुत ज्यादा यूज होगा एग्जाम्स में, याद रखना. साइक्लोहेक्सीन बनने वाला केस बहुत ज्यादा आएगा, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है इसमें. सो ये वाला रिएक्शन अच्छे से याद रखो. करेक्ट. It is not necessarily only selenium. We can use sulfur and heat also. So don't think कि इसमें कोई different reaction है. For all of these three, it is aromatization only. Okay. Another reaction which is very well used is red hot copper tube or red hot iron tube. So if you take 3 moles of CH triple bond CH, you let this pass through red hot copper tube or iron tube, you will get benzene. Okay. So as much as the reactions are concerned, student, ये सबसे ज़्यादा used reactions हैं. Correct. Apart of that, one more type which usually comes in conversions is this phenol in the presence of zinc. So we'll get benzene and ZnO. Done. बस ये सबसे ज़्यादा important reactions हैं. Clear? Apart of it, other than this, now coming to the reaction set of benzene. In benzene reactions, first check out for halogenation. If benzene is being treated with Cl2 in the presence of AlCl3 and heat, right? So this will become Cl here. So this is halobenzene, correct? We require a Lewis acid here. Always we require a Lewis acid, and little bit higher temperature will always be favorable. And the same logic can be done with bromine, fluorine, and so on. And the other reagents which will do the same way, bromine in the presence of iron or bromine in the presence of FeCl3, correct? Both will still do the same thing, and they will give you bromobenzene. Got it? Next, if you look at benzene treating with Cl2, but heat is being taken, but we have taken heat here. Okay. So in that case, if we take heat here, students, so addition reaction is favored here. So we will get H will be there, Cl will get added, and all of them. Sorry, H is the way it is, and Cl will get added. हर जगह पे आपको Cl add होते जा रहा है. So what we have here is C6, H6, and Cl6. This is what we have. Okay, this is called gamaxene. Right, everybody? This is what happens with Cl2. On the same hand, I told you, think the reactions happening on toluene also, because benzene के साथ साथ ही toluene चलेगा. So in case if we take toluene and react that with Cl2 and AlCl3 or Br2 and any Lewis acid if you take, अगर Lewis acid लिया आपने तो यहाँ पर आपको ortho and para products मिलेंगे. You will get always ortho and para products. Okay. But if you do toluene with any halide like Cl2 or Br2 in the presence of heat H2, then we will have CH2Cl here, correct? And this depends upon number of equivalents you are using. If you use one equivalent, if you use 3 equivalents or excess, right,
then every hydrogen will get replaced and will get CCl3. अब इसको यूजुअली यहां तक लेकर जाते हैं बेटा, CCl3 if you react that with NaOH, this is going to give us 3 moles of OH will replace all the chlorines, and that makes it as benzoic acid. Okay, in NCERT there is one reaction given directly this way, और इस पे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आ चुका है, सेम रिएक्शन हैज बीन रिपीटेड. Cl2 if nothing is given बेटा, कुछ भी नहीं दिया है, Cl2 number of moles are not mentioned, 1 mole 2 moles 3 moles excess कुछ भी mentioned नहीं है. Always exchange 2 chlorines. It is believed that up to 2 chlorides will be exchanged at a room temperature. When nothing is given, this is an assumption. And that when you react with water, water will replace that chlorides, both chlorides via SN1 mechanism. And because of which we will have 2 OH groups, and 2 OH groups are unstable on that, correct? And that will turn out to be aldehyde. ये सीधा सीधा हमको aldehydes and ketones के प्रिपरेशन में दिया है, 12th क्लास के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग, तो इसको जैसा है वैसे ही पढ़ेंगे. Clear everybody? So toluene plus nothing is mentioned means we will make 2 chlorides exchanged with hydrogens, and water on reaction with further water will get aldehyde. यहां तक halogenation clear है सबको? Right. Next, benzene with benzene, if you treat that with concentrated HNO3, and that preferably we take concentrated H2SO4, इससे nitration होता है. Here NO2 group will come. This is called nitration reaction. If we take toluene also, CH3, and the same concentrated HNO3 is used in the presence of concentrated H2SO4, here also nitration takes place. At what positions? Ortho and para position. So NO2 here and NO2 at para. Typically, para is always the major product unless and until students, unless and until there is any hydrogen bonding happening here. ठीक है? Only if there is any hydrogen bonding happening at ortho position, we might see ortho is more ortho is a major product, but otherwise it is always going to be para as major product. सर बस ऑर्थो और पैरा पे क्यों बनता है सर? क्या बेटा? Why does it form only on ortho? Okay, that requires mechanism, no? आपको सबको एक बार बता दो फिर से ES mechanism कैसे होता है. एक शॉर्ट में बता देता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है. देखो, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कहाँ कहाँ पे होता है, किस केसेस में होता है. देखो, Cl2 अगर आपने रिएक्ट किया बेटा AlCl3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा Cl प्लस और AlCl4 माइनस, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है बेटा. सेकेंड, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोड्यूस कर रहा है NO2 प्लस. ओके, बाकी HSO4 माइनस रहेगा, तो ये बन रहा है इलेक्ट्रोफाइल. अनिश, सो फार क्लियर बेटा? यस सर, यस. सो ये इलेक्ट्रोफाइल्स बन गए. अब बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा लाइक एन एल्कीन, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस आर फेवर्ड. लाइक Cl2 Cl प्लस है, तो फर्स्ट स्टेप में ये ऐड हो जाएगा, एंड एज सुन एज इट गेट्स एडेड वी विल गेट Cl हियर, H वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर कार्बोकैटायन बना. नाउ दिस कार्बोकैटायन विल कीप मूविंग अराउंड द बेंजीन रिंग. ओके, here moving around this cyclic ring by resonance, so we'll get double bond here, positive here, like this, Cl and H. ठीक है, and it will keep moving here also, plus with double bond here, here, and Cl and H. ठीक है, इस तरह से घूम रहा है. Now as it keeps moving, which means it is making this intermediate, right? ये एक intermediate बन रहा है, तो इसका हाइब्रिड कैसे होगा? हाइब्रिड इधर से
ऐसे करके यहाँ तक इसका हाइब्रिड हो. So it is a complete positive charge coming on these three locations. I'll just figure out that location. 1, 2, 3. इन तीन लोकेशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. Okay. This intermediate complex is called Weyland complex. Weyland complex or sigma complex. And this is the RDS. RDS का मतलब क्या है बेटा? Rate determining step, which means it is the slowest step. The slowest step is always about the loss of aromaticity. इसमें aromatic nature कम होते जा रहा है ना. पहले aromatic compound था, अभी aromatic compound नहीं रहा. That's why it is a slow reaction. Second reaction is always acid base reaction. यहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाला और aromaticity regain किया. This is how it was positive charge. तो यहाँ से जो भी क्लोराइड माइनस निकलता है, ये AlCl3 फिर से AlCl4 AlCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस बाहर आ जाएगा. That Cl minus will take away this H plus and it will try to retain back its aromaticity. So, इस तरह से आपको बेंजीन बन जाएगा plus HCl. So this is again gaining aromatic nature, aromaticity gained, and because it is gaining aromaticity, generally this is always going to be fast step. Clear? So between first step and second step, first step हमेशा faster होता है, second step हमेशा slower होता है, except in two cases. Anybody tell me what are those two cases? Iodination, sulfonation. Well done. Iodination and sulfonation में फर्स्ट स्टेप फास्ट होगा, सेकेंड स्टेप स्लो होगा. आपको कोई मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है, इतना याद रखोगे बस. ठीक है तनिष, क्लियर है बेटा? Yes, sir. सो एक्सेप्ट iodination and sulfonation, we will see benzene RDS is second step. ठीक है, इससे रेट पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा बिकॉज सेकेंड स्टेप में आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो ना, और जब भी स्लो स्टेप में हाइड्रोजन को निकालते हो, स्लो स्टेप में कहीं पर भी हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, इफ यू सी द रेट ऑफ नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, alkylation, और ये सारे जितने भी ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं, इन सारे केसेस में इफ यू टेक बेंजीन विथ ऑल ड्यूटेरियम्स और बेंजीन विथ ऑल ट्रिटियम्स, इनमें रेट में कोई फर्क नहीं मिलेगा. बट इफ यू टेक रेट ऑफ आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन, rate of iodination and sulfonation, now the rate will vary. C6H6 will have higher rate than C6D6 greater than C6D6. This is what you need to learn. Okay. Yes, sir. Right. So now I think ES is clear, beta. Yes, sir. Sir, but वो मेटा पे क्यों नहीं आता सर? वैसा नहीं समझा. हाँ अभी वहां तक पहुंचा नहीं. राइट, सॉरी. अभी बेंजीन की बात की है ना, बेंजीन में कोई ऑर्थोपेरा मेटा होता नहीं है. करेक्ट. हाँ. तो अभी देखते हैं टोलिन. इफ यू चेक आउट द सेम रिएक्शंस फॉर टोलिन, टोलिन पे आपको NO2 प्लस रिएक्ट कराना है. सो टोलिन में पाई बॉन्ड्स इस तरह से होंगे. अब ये पाई बॉन्ड कनेक्ट किया तो आपको तीन जगह पे पाई बॉन्ड कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से भी अटैक कर सकता है. सो वी विल गेट CH3. सपोज if NO2 gets connected here, we'll get positive charge here. This is the one. If NO2 gets connected here, then positive charge here, right? And CH3 here. ये ऐसे रहेगा. या NH3 gets connected here, and NO2 gets connected here, and CH3 is here. So we'll get positive one here, and this is the way bond is, right? These are the three places where the substitution is expected. And here if you see the positive charge, इस positive charge को ध्यान से देखना, this moves here and here, correct? These two places.
So I'll mark that point, this one and this one. These two places positive charge will come by resonance. So when the positive charge is reaching to this point, right? At this point, can you see that it will have, ये पॉइंट पे जब आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से इसका हाइपर कॉन्जुगेशन हेल्प करेगा CH3 का. ओके हितेश, आर यू क्लियर ऑन दैट? yesterday we discussed hyper conjugation. So CH3H plus कैसे रिलेट कर रहा है दोनों को, राइट बेटा? So hyper conjugation will help to get it more stabilized. Okay, but वही hyper conjugation देखो मेटा पोजिशन में नहीं मिल रहा है, because this positive charge from here will come to this point and this point. So if you see the positive charge बेटा यहाँ पर और यहाँ पर ही घूम रहा है. So since positive charge is going only on these two locations, there is no hyperconjugation help from this CH3. So NO2, यहाँ पर no hyperconjugation, no HC. Here we have an hyperconjugation effect. Same way here, if you see this positive charge is moving to this positive charge, here also hyperconjugation is helping. Yeah, Tanish, understood beta? Yes sir. Right. That is why, because at ortho position and para position, we are seeing there is an hyperconjugation which is helping. So what can we say? That these two will be major products and meta will be only in traces. Yeah. Okay. And within ortho and para, correct? Ortho and para, ortho पे हमेशा crowding आ जाता है molecules में. So always it prefers to go para unless it overcomes the crowding and makes an hydrogen bonding. H bond. Okay. So in that case, ortho will be major. That is a very rare case, but otherwise in general cases always para is major. Okay. Now this is about electrophilic substitution beta. Correct. I have given you a lot of groups, like which group will become, which is a strongly orthopara directory, which is a weakly orthopara directory, which is a meta directory. I given you 6 groups. I'll just brief you in a very simple way. Listen up. Group 1. These are all strongly OP directory. Strongly OP directory. मतलब ये हमेशा ऑर्थोपेरा पे ही प्रोडक्ट्स देंगे. So these are also called as strong activating groups. Strong activating groups. Groups like NH minus, O minus, NH2, OH, OCH3. These are the groups which are very, very strongly going to give, NHR or NR2. ये सारे के सारे very, very strongly donating groups है. They're very strong donating groups, so they will favor ortho and para positions. Group 2, correct? Group 2 आपको थोड़ा सा याद रखना है. So that will be NHC double bond O CH3 and OC double bond O CH3. कनेक्शन इस एंड से हो रहा है. ओके, कनेक्शन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के एंड से हो रहा है, राइट? एंड देन वी हैव, या लेट्स से these two groups, ये दोनों ही ग्रुप सबसे ज्यादा यूज होते हैं, which is moderately activating और also orthopara directing. ये भी OP directing है. ओके, group 3 are very weakly donating. Weakly donating means CH3, correct? We have CH3 and any form of CD3 here. Clear? इस तरह से जो भी groups होते हैं, CH3, CD3, C2H5, these are all weakly donating groups. So weakly donating groups will also give you orthopara directing. Group 4, if you look at it, halides. In case of halides, if you see X, that is all fluorine, chlorine, bromine, iodine, correct? And NO, nitro group, correct? And CHCl2, CH2Cl, okay? And CH double bond CH with halogens here, or CH double bond CH with electron withdrawing groups here, like NO2, CH double bond CH, COOH. These are all the groups. Clear? Now all of these groups, beta,
they all are actually orthopara, they are all weakly withdrawing groups. These are all weakly withdrawing groups are called deactivating. These are all weakly deactivating, but yet they will give orthopara directing only. They will give you orthopara directing. Next, group 5. If you look at group 5, these are strongly withdrawing now. Matlab, strongly withdrawing in a sense, they will give you only meta directing. So for example, if you have COOH, C double bond OH, esters, COOR, COCl, okay, these are all very, if you have CONH2, correct, all of these cases are meta directory, M directory groups, and these are strong deactivating groups. Strong deactivating groups. Group 6 is very strong deactivating groups like NO2, CCl3, CF3, cyanide, SO3H. These are considered to be very strong withdrawing groups. So these are, and NR2, NR3 plus, okay, NH3 plus. जितने भी प्लस चार्ज आ जाते हैं उसके ऊपर they become very strongly deactivating. So these are all very strongly deactivating. They are also meta directing in nature. Okay, and these are very strong deactivating. बस ये 6 groups के idea सबको होने चाहिए कि which groups will give, whether it is going to be donating, withdrawing, activating, deactivating, orthopara or meta direct. इसमें किसी को कोई डाउट? No. अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे. बस लास्ट थिंग दैट इज अबाउट aryl halides. Okay. In aryl halides, what you will observe, suppose if there is any X here, aryl halides में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं. Okay. Fluorine is more withdrawing by inductive effect, but it is also strongly donating group. Okay. So if you make any kind of reaction like this, CH3Cl in the presence of AlCl3, तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है CH3 प्लस. वो CH3 प्लस हमेशा ऑर्थोपेरा पे ही जाएगा. CH3 here and X with CH3 here. Clear everyone? Reactivity, if you check out the reactivity wise, fluorine, correct, if it comes to reactivity, fluorine is slightly lesser than chlorine, right, lesser than bromine, or bromine iodine almost same hai isme when it comes to electrophilic aromatic substitution. This is EAS reactivity, right? But here in aryl halides, more than electrophilic aromatic substitution, we are concerned about nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution means removing halides and replacing that with some other group. For example, if you take halogens, chlorobenzene like this, and you're treating with KCN, and if you're expecting this reaction to take place, that cyanide will come here and KCl will come, then this will not happen. There is no SN2 reaction that will take place here. There is no SN1 reaction that takes place here. Okay, but we can make this reaction happen only at a very rigorous condition, that is very high temperature and very high pressure. In those conditions we can make this happen, correct? In those conditions, yes, we can get this as cyanide. Clear? But that is not very favorable. Like I said, this getting this is hypothetical. So what we can do,
instead, if you have chlorine here, suppose this is purely coming from an experimental point of view. If I take NaOH anhydrous, correct, and treating that at 623 kelvins and around 100 atm pressure, then this has become O minus Na plus. ये reaction हुआ है, okay? And if you check Cl with NO2, अगर कोई भी withdrawing group आ चुका ना, and now if you treat with NaOH, we require less amount of temperature now, correct? Less amount of pressure now. Pressure required is less, and we will get O minus Na plus with NO2. And in fact, if you have more number of NO2 groups here, ऐसे NO2 groups और भी बढ़ाते जाओगे, so now we would require even at slightly higher temperature around 303 kelvins, correct, pressure around 10 atm, we will still get this reaction to be done. O minus Na plus NO2 and NO2. And in fact, by the time you reach that all are NO2 at ortho and para position here, right, with NaOH, now at room temperature 27 degrees centigrade and 1 atm pressure, at room temperature conditions also, this will become O minus Na plus with NO2, NO2 and NO2. The last three reactions are done by ARSN2 mechanism. The first reaction is done by Benzene mechanism. Benzene mechanism. Clear students? अब ये ARSN2 क्या है एक बार मैं बता दूंगा. ये ARSN2 ही important है हमारे लिए. Suppose if you have chlorine here, the incoming nucleophile here is O2 minus. Okay, basically OH minus है. It is OH minus which is coming. Eventually वो O2 minus बन जाएगा. देखो OH minus है. OH minus is attacking here first at this position. As soon as the attack take place, we'll get minus here, Cl and OH here, and this only happens at a high temperature. And then you can see there is a resonance which is happening here, and that resonance minus charge will keep moving around these places. So I'm directly writing the hybrid. This is how the hybrid look like, with delta negative charge, delta negative charge, delta negative charge, Cl and OH with delta negative charge. Okay. Now, what would happen from here? We are supposed to eliminate, because we are getting it as double bond here, here, and minus here by resonance. Now, when it tries to get aromatization in the second step, the leaving group will go. And that's how it will retain the aromatic nature, and OH will come, Cl minus will come. And since this solution is in a high concentration of OH minus, it will take away this H plus, and we will have this as O minus and Na plus. That's how the product formation is observed. So this complex, वहां पे एक याद है electrophilic aromatic substitution में हमने valent complex बनाया था, right? So this is called Marin-Heyman complex. Heyman complex, or simply MH. मैंने क्या बोला? महाराष्ट्र complex. इस तरह से याद करो, correct? Now here beta, rate of reaction, that this going in the forward direction, this is the RDS reaction. So stability of this MH complex is important. Acha, how will it get stabilized? Stability of MH complex depends upon what withdrawing groups we have. Because it is becoming sp3 carbon now, only inductive effect will help, or any withdrawing groups at this ortho and para position will help. That's why if you observe, reactivity of this is more, right? This is the most, then comes this one, then comes this one, and least is the reactivity for this one. Because at ortho and para position, जितने withdrawing groups होंगे, उतना ही better होगा ये reaction. Clear? And second thing is that when it is withdrawing in all these positions, this carbon is being only sp3. So if you compare Cl, F, if you compare this chlorine, bromine, iodine, and fluorine, which will have better rate beta?
इट इज द फ्लोरीन नाउ, इट विल हैव बेटर रेट फॉर ArSN2. बस ये याद रखना है आपको. ArSN2 for fluorine will be greater than chlorine, then bromine, then iodine. Yeah. Right. Now we will start everything with the questions. Okay. बस यही एक मैकेनिज्म है जो कि आपको याद रखना है. बाकी क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पढ़ते जाएंगे. Can you all open up the sheet of benzene? Sir, have you sent this on group? I have sent it on WhatsApp group. Benzene EAS, I have written there. Benzene EAS. It's on the group. Just a second, I'll be back. Yeah, that's all. Right, let us see here. फर्स्ट ये सारे प्रिपरेशन रिएक्शंस है, जल्दी जल्दी याद करेंगे सब लोग. उसके बाद ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है. मैं एक एक करते भी जाऊंगा और अभी साथ में करते जाओ, तो वैसे ही प्रैक्टिस होगा. ओके, हैव यू ऑल ओपनड इट? या बुक रखो साथ में, एटलीस्ट ये लिखते जाओ. क्वेश्चन नंबर 1 में ये कौन से ऑप्शंस. ठीक है. Right, first one, N-hexane, if you want to get it to benzene, what is the reagent used, everybody? Al2O3, Cr2O3 and heat. Done. Next, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सीन, या मैंने क्या क्या बताया था? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, डाइन, साइक्लोहेक्साडाइन. करेक्ट. आइसोलेटेड या कॉन्जुगेटेड, ये सारे के सारे हम लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे? Platinum. Right, selenium and heat, or platinum and heat, or sulfur and heat. Very good. And same as above. This is same as above. 20 minutes. Next, ब्रोमीन से हम लोग को ये लेकर आना है. आप सोचो डायरेक्टली ब्रोमीन से कैसे आएगा? एवरीबॉडी, हैलाइड से हमको ये लेकर आना है. आपको बताना, आपको पार्टिसिपेट करते हुए करना है. कैसे? देखो, हमेशा हैलोजेंस को अगर एल्केन में बदलना है तो बेस्ट वे है ग्रिग्नार्ड्स में कन्वर्ट करो. क्या करोगे? ग्रिग्नार्ड. सो ग्रिग्नार्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? मैग्नीशियम एंड ईथर के साथ रिएक्ट करके. तो पहले क्या आ जाएगा हमको? राइट, MgBr. करेक्ट. MgBr मिल गया तो उसको हाइड्रोलाइज करो, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन. क्योंकि यहाँ पे फिनाइल कार्ब एनियन रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, ये माइनस H+ को लेकर बेंजीन बन जाएगा. क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट, फिनॉल को हम लोग को बेंजीन में बनाना है. कैसे बनेगा? जिंक एंड हीट. Done. You have done that. Next, N2Cl. N2Cl is the सर एसिड यूज कर सकते हैं उसमें. कौन सा एसिड? इसमें वाटर कैसे निकालोगे? H2O नहीं निकलेगा. ओके, यस. जिंक एंड ऑक्सीजन यूज करना पड़ेगा. यही इंडस्ट्रियल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट. जिंक एंड हीट से ही हम लोग को ये मिल जाए बेंजीन. दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट. अब देखो, डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूंगा. Benzene with N2 plus and Cl minus beta. Suppose if you react this with
copper dust, and any X2. That X2 includes chlorine, bromine, Br2, and I2. Any of this, we will get this as halogens here, right? And this mechanism is called Gattermann. I mean, this reaction is called Gattermann reaction. Yeah? So get the Gattermann reaction. Next. If we treat that with CuX, and X could be chlorine, bromine, iodine, or cyanide also. In that case, again, I'll get this X. This is called Sandmeyer reaction. Next. If you treat that with Na plus BF4 minus, okay, in the presence of HBF4, that will give us fluorobenzene, and this is called Bald-Schiemann reaction, MANN, Bald-Schiemann reaction. Next, if we treat that with H3PO2, then we will get this as benzene plus H3PO3. ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इससे भी बेंजीन मिल जाएगा. And if we treat that with C2H5OH, alcohol and heat, then also I will get benzene, and alcohol will become aldehyde. This is the one reaction. Okay. If we treat this with water, H2O, warm, then we shall get phenols. Correct? If we treat that with alcohol, warm, you will get this as OR. These are diazonium salt reactions. ये क्लियर है सबको? चलो अभी ऊपर आ जाओ. N2Cl to get benzene, what do we use, beta? H3PO2 I can use, or I can use ethanol. In both the reactions, I will get benzene. Done. Next, acid से benzene कैसे आएगा? Anybody? Benzoic acid से acid, कोई भी acid से alkane कैसे आता है? किसी को याद नहीं है? SLDC. ये हाँ सॉरी अरे बोलने वाला SLDC. Soda lime decarboxylation. डिकार्बोन याद रखो सब. NaOHCl. सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन. सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन लिखने में ऐसे NaOH by CaOH twice. हाँ बोलो. One second. देखो नेक्स्ट SO3H. SO3H के साथ हमने क्या रिएक्ट किया था? सपोज उल्टा रिएक्शन है बेटा यहाँ पे. अगर डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हो, ठीक है, तो ये HO3 माइनस निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगा. और उल्टा करोगे यहाँ से, इफ यू यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो रिएक्शन बेंजीन से इस तरफ चला जाएगा. सो डाइल्यूट में बेंजीन, कॉन्सेंट्रेटेड में सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर? बस यही है प्रिपरेशन रिएक्शंस. अभी फटाफट रिएक्शन की तरफ आओ, प्रोडक्ट बताओ और मैकेनिज्म बताओ. बेंजीन, if you treat with Br2 in the presence of iron, what do we get? Br. और ये आ जाएगा FeBr3. ऐसे बनते जाएगा वो बेसिकली. And this is by electrophilic aromatic substitution, EAS. Second one, same thing, chlorobenzene. This is also EAS. ICl. आपको सिर्फ देखना कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कौन सा है बेटा. That's all. Which one is positive here? I plus and Cl minus. So जो पॉजिटिव वाला है वो ऐड कर देगा. So आयोडीन आ गया. इधर पॉजिटिव वाला कौन है?
Cl. यहाँ पर पॉजिटिव वाला कौन है? NaOH एंड I2, मतलब यहाँ पर NaOH एंड I2 क्या बनेगा? I plus, that will become IOCl, right? Sorry, IONA. IONA मतलब iodine. I2 plus HiO3. I2 in HiO3 will give you I plus Hi. So again we'll get IDO. Concentrated H2SO4, बोला ये सल्फोनेशन है, SO3H. Concentrated HNO3, nitration. Right. Next benzene plus MEBr, Me आ जाएगा. अब इसको कहते हैं बेटा फ्रीडेल क्राफ्ट्स alkylation. Okay, now listen up. अब इस पे आते हैं फिर से फ्रीडेल क्राफ्ट्स. Friedel Crafts reactions. Friedel Crafts reactions are only observed in these cases. Cases where you have like this benzene, और बेंजीन के ऊपर ग्रुप्स क्या होने चाहिए वो एक बार चेक करो. सी बेंजीन, उसके ऊपर CH3 या C2H5 या हैलाइड्स या NO, और you should have CH2Cl or CHCl2, correct, or CH double bond CH2. Only these are the cases which are moderately or weak orthopara directing. So moderately or weak orthopara directing cases will only be valid for Friedel-Crafts reaction. These all will give, they give FC reactions, Friedel-Crafts reactions. Okay. But on the other hand, if you take any other cases like strong activating or strong deactivating, if we take strong activating or strong deactivating, like strong activating matlab OH, NH2, okay, NR2, OCH3, they will not give any reaction. NO2, cyanide, CCl3 or SO3H, these also will not give any reaction. These will not give FC reactions. No FC reactions, and this will give FC reactions. पहले ये याद कर लेना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है वो देखो. पहले groups very moderately activating or moderately deactivating will give you Friedel-Crafts reactions. Okay. What is happening in Friedel-Crafts reaction? If we have, let's say, some moderately activating group, if we treat that with something like CH3Cl in the presence of AlCl3, here it is generating CH3Cl, and this Cl is connected with AlCl3, and this will become this will become delta positive and that will become delta negative. So यहाँ पर आपको sufficient positive charge आ जाता है, and that positive charge will get connected with benzene as CH3 here, and one more CH3 will come here, and I said para is major product, so I'm writing only major. So this will be the major product, and this is called Friedel-Crafts alkylation. Acylation, in case if you use CH3 C double bond O Cl in the presence of AlCl3, in this case you will get a complete carbocation formation here, which is CH3 C double bond O plus, ये बन जाएगा और AlCl4 minus निकल जाएगा, and this plus is going to get connected at ortho and para positions. So we will get CH3 here and C double bond O CH3 here. So this gets connected. This is the major product. So I suppose all of you understood that this is Friedel-Crafts alkylation. अब imagine करो यही दो reaction इन सब के साथ हो रहे. Clear everyone? Yes, sir. Coming back to this now, चलिए फटाफट बता दो अभी. Friedel-Crafts reaction in this case, first one is Friedel-Crafts. What is the next one? What is the next reaction? Tell me. Anybody?
reactions here. Other than Friedel-Crafts reactions, what are the other reactions which are normally seen on benzene? देखो, HCHO, HCl and ZnCl2. Okay, this is called Gattermann-Koch reaction. Okay, इसका नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर भी आपको बेसिकली ऐसे हो रहा है, H C डबल बॉन्ड O H है, राइट? और एसिडिक मीडियम में ये H प्लस ले लेगा और ये लेकर यहाँ पे कार्बोकेटन बना देगा और बेंजीन इस कार्बोकेटन पे अटैक कर जाएगा, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट aldehyde. We are going to get this as aldehyde. So CHO, this is Gattermann-Koch. Gattermann-Koch reaction. Right. Next one, H2. सर मुझे डाउट, हाँ बेटा. सर मतलब अभी समझो ऐसे ही दो तीन कैटलिस्ट मतलब वो दिए हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन से कंपाउंड का है और कौन सा है वो नहीं पता चल रहा. मतलब अगर दो मिले तो पता चल जाता है, अभी इसमें तो तीन कैटलिस्ट है. नहीं, ये ZnCl2 हमेशा कोई भी मेटल हैलाइड्स या मेटल, वो सब लुईस एसिड से, ये लुईस एसिड है. ओके, यहाँ पे जितने भी ऐसे मेटल्स दिखते हैं ना, ZnCl2, FeCl2 और FeCl3, Fe, ये सारे कैटलिस्ट है बेटा. आई मीन लुईस एसिड्स. लुईस. लुईस एसिड्स सिर्फ अपने ऊपर चार्ज लेते हैं और कार्बोकेटन को बनाते हैं, आगे वाले को कार्बोकेटन या इलेक्ट्रोफाइल को बनाते हैं. okay? उनका रोल उतना ही है. यहाँ से इसने Cl लिया, H प्लस को छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग एनहाइड्रस ले रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्वस नहीं ले रहे. ठीक है, सो H प्लस, अब वो H प्लस ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन पे अटैच होने के चक्कर में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये एल्डिहाइड फॉर्म आ जाए. ठीक, हाँ. PTO2, PTO2 का नाम है एडम्स कैटलिस्ट. PTO2 का नाम है एडम्स कैटलिस्ट. एडम्स कैटलिस्ट नॉर्मली तो डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करता है जस्ट लाइक H2 बाय निकल, बट यहाँ पर बेंजीन को रिड्यूस करने वाला ये एक ही कंपाउंड है. बेंजीन रिड्यूस हो जाएगा, अंदर वाला रिंग रिड्यूस हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट, V2O5 एंड हीट. V2O5 एंड हीट में क्या बनता है? एनीबॉडी? बेंजीन को हमने हीट किया, क्या बन सकता है? बेंजीन को वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ हीट कर दो. On heating with vanadium pentoxide at lower temperature, ठीक है, at lower temperature हमको यहाँ पर ऐसे सॉरी एट हायर, फर्स्ट में हायर टेम्परेचर लिख देता हूँ. हायर टेम्परेचर पे हम लोग को एक कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर आ जाएगा, एंड वी विल गेट दिस एज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप लोग ऐसे ही याद कर लेंगे. Correct? So it is given that it will become an anhydride. That's it. So remember that it is an anhydride reaction. Okay. हाँ, if it is at a 300 degree centigrade, अभी ये एसिड की तरह रह जाएगा, OH और OH. That's it. और ज्यादा हीट करोगे तो ये एनहाइड्रस की तरह बन जाएगा. Done? Next. सर पर दोनों 300 और 500 दोनों ही हाई टेम्परेचर हैं. हाँ बेटा, this usually exist, this one, because of it hydrogen bonding. If you look at this form, इस तरीके से COOH and COOH, इसको कहते हैं हम लोग फ्यूमरिक एसिड. रिमेंबर? करेक्ट. सो फ्यूमरिक एसिड की तरह एग्जिस्ट करेगा ये जब तक 300 डिग्रीज हो. 500 डिग्रीज पे इवन दिस पाई बॉन्ड मतलब इतना रोटेटरी हो जाएगा कि इसमें से ये वाटर निकल जाएगा और वो एनहाइड्रेट जैसा बन जाएगा. अदरवाइज इट एग्जिस्ट इन फ्यूमरिक फॉर्म. ठीक बेटा, मेलिक फॉर्म में नहीं रहेगा, ये फ्यूमरिक फॉर्म में रहेगा. Yeah. Next one, if you see this one, ZnCN twice,
HCl H2O इसके साथ रिएक्शन करोगे तो आपको ये मिलेगा सेम थिंग। यहाँ पे देखो बेटा Zn साइनाइड है ना, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, करेक्ट। एंड इसमें एक प्रॉब्लम है, ये मैकेनिज्म में प्लीज आप जाओ मत, क्योंकि ये मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इतना मैं हिंट दे देता हूं कि साइनाइड है ना, Cn माइनस है, राइट। अभी HCl को साथ रिएक्ट किया आपने, क्या हो जाएगा, HCl के साथ रिएक्ट किया, जो C माइनस है वो H प्लस ले लेगा पहले, HCN बन जाएगा। और इस पे आप वाटर ऐड कर दो, वाटर ऐड करोगे तो ये पूरा नाइट्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, दो बार वाटर ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये आल्डिहाइड जैसा फॉर्म बन जाएगा, दिस विल बिकम आल्डिहाइडिक फॉर्म। सो ये आल्डिहाइड फॉर्म में अगर H प्लस जोड़ दोगे तो यू विल गेट डेल्टा पॉजिटिव ऑन कार्बन। सो फिर से बेंजीन डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा एंड वी विल गेट द सेम आल्डिहाइड फॉर्म। सो इसको प्लीज सीधा सीधा याद करके रख लो बेटा, that this is also going to give you benzaldehyde. Okay, sorry, ऊपर वाला reaction, this is also going to give us benzaldehyde. Done. This we have done already. HCHO, ये HCHO को जैसे reaction किया यही same है, COHCl AlCl3 same reaction. There is also Gatterman-Koch reaction, so we'll get this as CHO. Next, C double bond O NMe, यहाँ पर POCl3 के साथ यूज किया है। देखो स्ट्रक्चर को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, HC डबल बॉन्ड O N Me एंड Me, ठीक है। एंड POCl3 में ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट कर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, so यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर बेंजीन उसके ऊपर अटैक कर जाएगा, विल गेट दिस एज C डबल बॉन्ड O NMe twice, so this is the product. And all of these are electrophilic aromatic substitution only. Next, D2SO4 D2O excess, D2O excess मतलब क्या हो रहा है, हमने क्या लर्न किया है, दैट जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं यहाँ पर, ये सारे जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं, बिकॉज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल हैव दिस पार्ट, राइट। इन सल्फोनेशन वी हैव सीन दैट SO3H and H double bond positive, this is the intermediate which is forming, okay, this is the intermediate which is forming, and after that we will see D2O plus, sorry, D2O is the one which will eliminate this hydrogen, and that will make this as a double bond formation. So which means we are still getting this as SO3D, we'll get this as SO3D. Next, H के बदले में D आ जाएगा, Cl2 and H nu, Cl2 and H nu, what do we get? अभी मैंने बताया था आपको क्या बनेगा बेटा, वो सब जगह गामा तो सारे क्लोरीन्स आ जाएंगे इधर इस तरीके से, Cl 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 and Cl, so this is gamaxane. नेक्स्ट वाला Cl2 excess, इस बार सीधा क्लोरीन आएगा बट बेंजीन रहेगा ये, हाँ क्योंकि एक्सेस है ना, ये भी सारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बट दिस टाइम विथ बेंजीन। सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस है यहाँ पे, C6H6Cl6, यहाँ पे C6Cl6, दिस इज कॉल्ड हेक्साक्लोरोबेंजीन, दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन HCB, करेक्ट। All of you understood the reactions now? Yes, sir. Right. Now use the same logic what we have done above. अभी टोलिन के लिए आप करके बताओ क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन सा करना है वो मैं बताता हूँ। पहला, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ये दोनों मत करो, सिक्स्थ वन ये करो, ये करो, ये करो, NBS, सेलेनियम, फ्लोर, बस ये सारे कंप्लीट करो वो दोनों के अलावा, एंड कीप टेलिंग मी व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग।
first one is what called beta? Birch reduction. Very good, that is called Birch reduction. Okay, जिसको याद नहीं है Birch reduction मैं फिर से बता रहा हूँ, चेक करो. Birch reduction makes three very important reactions. If you have CH3 C triple bond C CH3, that is substituted alkyne. Okay, and if you treat that with sodium, okay, in liquid ammonia or lithium in liquid ammonia, dono same, this will give us a trans alkene. This is reaction number 1. Second, if you have CH3 CH double bond CH2, that is terminal alkyne, and you treat sodium and liquid ammonia, right, here we'll get an alkene. Okay, only terminal alkenes mein, substituted alkenes mein no reaction. Next, if you treat that with benzene and Birch reduction, here benzene will become isolated diene. ये isolated diene हो जाता है. Same reaction अभी भी हो रहा है, but अभी withdrawing group है, sorry, donating group है. If there is any donating group and Birch reduction is done, then donating group क्या है? donating के side में double bond आ जाएगा, right? इधर Yes, sir. CH3. Oh my God. अगर आपके पास कोई withdrawing group है like NO2, right, तो Birch reduction करोगे तो क्या आएगा? isolated diene. Isolated diene दूर आ जाएंगे उससे. बस, वेरी गुड बेटा. जिसको याद है, जिसको याद नहीं है अभी फिर से मेमोराइज करो. अभी अभी जितनी बार रिपीट करोगे खुद से उतना अच्छा है बेटा. Birch reduction बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरिया है जेई एडवांस के लिए. मेंस के लिए सिलेबस में नहीं है, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है Birch reduction. ये 5 केसेस. चलो, तो अभी बताओ, ये अभी पता चल गया फर्स्ट वाला रिएक्शन. So ये donating effect. Okay, so methyl is donating, so we will get this CH3. Second one अभी हमने किया है, Cl electrophilic aromatic substitution. तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन और CH3 यहाँ पे क्लोरीन. मेजर प्रोडक्ट कौन सा? पैरा. नेक्स्ट Cl2 एंड H nu. यहाँ पर क्या बताया मैंने? CH2Cl. ठीक है, क्लियर. अगर इसका एक्सटेंडेड रिएक्शन दिया है तो आप क्या करोगे? एक्सटेंडेड रिएक्शन अगर कोई गिवन है लाइक वाटर के साथ, ना अगर ये यहाँ पे मोल्स मेंशन नहीं है, मैंने बताया आपको मोल्स मेंशन नहीं है, एक्सटेंडेड रिएक्शन है, तो 2 बार कर दोगे, वाटर के साथ ट्रीट करोगे और उसको बेंजाल्डिहाइड बना दोगे. ठीक है. अगर एक्सेस दिया है तो क्या करोगे? CCl3 बनाओगे और उसको हाइड्रोलाइज करने पर बेंजोइक एसिड आ जाए. डन. नेक्स्ट वन इज फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन. सर इधर तो CH2Cl ही आएगा ना? क्या बेटा? इधर तो CH2Cl ही आएगा ना? CH2Cl. हाँ, इस केस में CH2Cl. मैंने एक्सटेंडेड लिख दिया ना, अगर एक्सटेंडेड नहीं है मैं इतना ही लिख देता. Cl2H nu. कोई एक्सटेंशन नहीं दिया है तो आप सिर्फ एक ही मोल लिखोगे, दैट इज CH2Cl. दैट्स ठीक है. नेक्स्ट KMnO4. KMnO4 की रिएक्शंस धड़ाधड़ याद आ जानी चाहिए सबको. KMnO4 का ऑक्सीडेशन. चलो देखो, मैं फिर से सबको बता रहा हूँ क्या करना है. बेंजीन के ऊपर ध्यान से देखो सब लोग. बेंजीन के ऊपर कार्बन है और कार्बन के साथ नो मैटर व्हाट एवर बॉन्ड्स वी हैव, वी शुड हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन. इफ देयर इज एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1. Then on oxidation with KMnO4, that will become benzoic acid. That's all you need to search for. Correct? So for example, ये वाला कंपाउंड, उसमें 1 हाइड्रोजन है. ओके, ये वाला कंपाउंड, इसमें 2 हाइड्रोजन है. करेक्ट. और ये CH3, अभी
यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप है, और ये वाला कंपाउंड 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है अभी भी, या उसके ऊपर डबल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड CH2, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, करेक्ट। ये सारे ऑक्सीडेशन में ये सारे के सारे बेंजोइक एसिड देंगे, एक्सेप्ट दिस रेस्ट ऑल विल गिव अस बेंजोइक एसिड, करेक्ट। अभी साइड प्रोडक्ट्स देखते हैं, बेंजोइक एसिड तो मिलेगा, इसके अलावा साइड प्रोडक्ट्स क्या है। यहां पर देखो, इस तरह से तोड़ोगे आप, हियर यू विल ब्रेक हियर एंड हियर, ये वाला कार्बन तो बेंजीन के साथ चला गया, बाकी ये जो 2 कार्बन है दे विल बिकम सिंगल कार्बन्स विल ऑलवेज बिकम कार्बन डाइऑक्साइड, सो यू विल गेट 2 CO2। यहां पर भी सिंगल कार्बन है तो CO2, राइट, so that will become CO2 here, CO2। थर्ड वाला केस तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं। फोर्थ वाला केस, इधर कटेगा इधर कटेगा, एक CO2 रहेगा, दूसरा एसिटिक एसिड, यहां पर इधर कट गया तो CO2, यहाँ पे कट गया CO2। ऑक्सीडेशन क्लियर है सबको? इतने केसेस पता होने चाहिए, बाकी सारे केसेस फिर से आने वाले हैं, ये सारे के सारे एल्डिहाइड चैप्टर में भी आएगा, एसिड्स वाले चैप्टर में आएगा, सो डोंट वरी। देखो KMNO4 एंड हीट, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? सिंपली बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, ये दोनों अभी रहने दो क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा अभी। नेक्स्ट ये वाले देखो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रो नाइट्रेशन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन किधर किधर होएगा? NO2 इधर और ऑर्थोपैरा और 2 और पैरा। CH3 कोई स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है क्या? नहीं, स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो एक्सेस होने पर भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि तीनों की तीनों NO2 एक जगह लगा, वो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड हीट, सेम आई विल गेट दिस एज, सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड हीट। देखो ध्यान से देखना, concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4 will act as a nitrating agent, मतलब this will create NO2 plus, creates NO2 plus। concentrated HNO3 ही दिया है and heat दिया है, this is oxidizing agent exactly like KMNO4, this is oxidizing agent exactly like KMNO4, so what do we get? COOH। बस डिफरेंस क्लियर है। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस आपको पता है प्रोडक्ट क्या आएगा? ओजोनोलिसिस में आपको सिर्फ बॉन्ड तोड़ना है, इधर इधर और इधर, सो व्हाट डू वी गेट हियर? दिस वन इज, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, सो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये आ जाएगा CHO एंड CHO, ये पहला, करेक्ट। इधर भी ये CHO एंड CHO बन रहा है, तो 2 मोल्स ऑफ CHO एंड CHO, और एक CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, so we'll get this as CH3 C double bond O, C double bond O and H. So this is the final product. Clear बेटा? H2 निकल एंड हाई प्रेशर, हाँ H2 निकल एंड हाई प्रेशर में अंदर के सारे रिड्यूस हो जाएंगे, so we'll get this as CH2. Okay, at high pressure, if it is not at high pressure, no reaction. Next, NBS, एन ब्रोमोससिनामाइड। देखो बेटा, कहीं पर भी NBS दिखेगा आपको उसको अल्लाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करना है, Br आ जाएगा। NBS इज अ, अगर मल्टी चॉइस होगा तो हम लोग एडिशन गिन सकते हैं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन में अगर मल्टी चॉइस होगा तो सब्स्टिट्यूशन विल बी मेजर। सर नो, नॉट इन दिस केस स्पेसिफिकली, बट अगर कोई दूसरा केस होगा तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेजर होगा, बट हम लोग उसका एडिशन थोड़ा गिन सकते हैं कि उसको स्किप करना है। यहाँ पे एडिशन ही हुआ है ना, इस केस में तो एडिशन ही हुआ है। इस केस में सारे H ऐड हो गए ना, इधर 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 ऐड हो गए। नहीं सर, NBS के केस में NBS, ओके, नाउ लिसन अप, क्योंकि जनरली सब्स्टिट्यूशन मेजर होता है। सब्स्टिट्यूशन ही होगा, एडिशन नहीं होगा मेजर। ओके, इसको ऐसे याद करना है। देखो, इन केस इफ यू टेक
Br2 and heat. Okay, and if you take, sorry, Br2 and H nu, and if you take Br2, sorry, HBr, and H2O2, Br2 and heat, sorry, heat, yeah, NBS. Okay, Br2 H nu and Br2 heat, both of them are same. Okay, both of them are same, and always substitution is highly favored than addition. Okay, in this case देखो बेटा, यहाँ पर substitution is highly favored than addition. Substitution is highly favored than addition. ठीक है, HBr and H2O2, addition is highly favored than substitution. Okay, here substitution only. अब ठीक है बेटा, इस केस में क्या करना? हाँ सर, समझ। Right. Next, SeO2. SeO2, whatever the Oxidation aldehyde, at alkyl. correct, oxidation, और ये ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा? OH. OH, अल्कोहल आ जाए. राइट. नेक्स्ट, Cl2 excess H nu. अभी हमने किया था, क्या बनेगा? CCl3. CCl3. CCl3, राइट, CCl3, और उसको हमने CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? एसिड. ओके, अब ये एसिड के पास रुकेगा नहीं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बेस है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा. आपको फाइनली सॉल्ट की तरह दिखाना है इसको, राइट, ट्वाइस Ca. ठीक है, क्योंकि फर्दर रिएक्शन होते रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो फाइनली विल गेट कैल्शियम सॉल्ट. डन. अभी यहां से सारे बेटा रिएक्शंस आपको देख देख के करने पड़ेंगे. अब साथ में करो मेरे. फर्स्ट केस मिथाइल है यहाँ पर. AlCl3 इपॉक्साइड के साथ क्या करता है, ये मैं एक का हिंट दे देता हूँ, ये किसी भी केस में वैलिड है. एक अप्लाई करो तो आप हर केस में आपको ऐसे ही सोचना है. बेसिकली वी हैव epoxide here like this. In the presence of AlCl3, first oxygen will attack on AlCl3 and makes this as AlCl3 plus charge. ठीक है, ये प्लस रहेगा. अब देखो, ये दोनों में से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन हैंडल कर सकता है? ये सब्स्टिट्यूटेड वाला प्लेस. बस वही ध्यान रखना है आपको. सब्स्टिट्यूटेड वाला प्लेस बेटर हैंडल कर सकता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहां से टूटेगा. अब बेंजीन कहां से जुड़ जाएगा, मतलब टोलिन कहां से जुड़ जाएगा? यूजुअली पैरा से, बिकॉज ऑर्थो और पैरा में कौन सा फेवरेबल पोजीशन है? पैरा. सो पैरा से इधर कनेक्ट कर जाएगा. That's how electrophilic aromatic substitution takes place here with toluene, and this group is connected here with benzene, and O minus वो hydrolyze होके OH आ जाएगा. Clear everybody? This is the final product. Any doubt in there? Right. See the next case. We have OC double bond O CH3 in the presence of Br2. It is a mild donating group here, so it will always favor ortho and para, but which is major? Para is major. So Br here, OC double bond O CH3, this being major product. Okay, next, NO2 plus. If you have NO2 plus, BO4 minus. अब NO2 प्लस किधर अटैच होगा ये बताएंगे सब लोग, कोई ना कोई अच्छे से सोच के बताओ. डोनेटिंग देखो, विड्रॉइंग देखो, किधर है? डोनेटिंग के एरिया से सोचो.
Okay, let me write down the numbers. Maybe that's how it can tell me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, tell me which position. और फोर्थ वाले में फोर्थ में ऑलरेडी है ना बेटा, फोर्थ में ऑलरेडी मिथाइल है ना, मिथाइल को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, होना चाहिए कायदे से फोर्थ में, यू आर राइट, बट फोर्थ में ऑलरेडी ग्रुप है तो किधर जाएगा? थ्री और फाइव मेटा डायरेक्टिंग हो गए, ईशान, बिकम मेटा डायरेक्टिंग. Now you have to decide which is a more donating group here. Is it the methyl or is it this group? Nitrogen with a lone pair, that is better than that of methyl. So you have to now decide the case on the basis of this nitrogen. On the basis of nitrogen, which are the groups open currently? 2, 6 and 4. 2, 6, 4 open है ना, ऑर्थो पेरा, ये दोनों ऑर्थो, ये पेरा, बट पेरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, पेरा ऑक्यूपाइड है, तो कहाँ पे अटैच होगा? ऑर्थो पे. तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा NO2. क्लियर? लेट मी राइट डाउन दैट. So NO2 will get attached at this position. So that is a major product. Anyone has a doubt, they can stop me and ask me on that. Yes, Atharu, correct. Great. Others? What about the next one? अभी next one तो उसके basis पे आ जाना चाहिए आंसर. Just post your answers here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dash, ये सारे 1 dash है. 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash. Think which position it will be. Write someone. Think about the next case. ते 1 dash पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल है, क्यों जाएगा उस पे? 1 dash पे SO3 है, ऑलरेडी है ना उधर लोकेशन, ऑलरेडी कार्बन हैज 4 bonds. Athar, why would it go on 6 dash? देखो, SO3 this side it is strongly withdrawing. S double bond or double bond, ना, it is strongly withdrawing. While nitrogen, it will be sharing electrons on both sides, so it is actually donating. So which ring is activated? This ring is activated, this ring is deactivated. Always put electrons on the activated ring. So this is an activated ring. On the activated ring, I have 2, 4, 6. And you can see 6 is the least crowded place. So where would it occupy? 4th place. 4th place, NO2 plus will come. Everybody understood that? 7th one. Tell me about it. Benzene with the ClCl. Okay. And with benzene. What did I tell you? अगर तीनों के तीनों Cl होते तो क्या होगा? वो मेटा डायरेक्टिंग है ना. अगर 2 Cl है तो वो क्या होगा? अच्छा, बट उसके बेसिस पे नहीं है, सॉरी, कार्बोकेटाइन तो इधर बन रहा है ना, माय मिस्टेक. अभी तो बेंजीन के टर्म्स में, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है पहले. इफ कार्बोकेटाइन इज गेटिंग हियर, यहाँ पे एक बार अटैच होगा, क्योंकि यू आर टेकिंग दिस एज एक्सेस, यहाँ पे 2 बार कनेक्ट हो जाएगा. सो व्हाट डू वी हैव हियर नाउ? सो वी विल हैव दिस एज
benzene, and at this position I'll have one benzene here and another benzene here. This is what I'll get. Done? Have you guys understood that? यहाँ से Cl माइनस निकला बेटा, पहले कार्बोकेटन आया, बेंजीन अटैक कर गया, सेकेंड टाइम फिर से Cl माइनस निकला, कार्बोकेटन आया, बेंजीन अटैक कर गया. So we'll get that. Done? Right. Next one. सर बहुत ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा इसमें? क्या बेटा? बहुत ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा इसमें? हाँ बेटा, इसको कहते हैं प्रोपेलर शेप, इफ यू रिकॉल. ओ हाँ, ये तो किया था. यस. ये कार्बन हाइड्रोजन ऐसे रहेगा और बाकी जो तीन है ना वो प्रोपेलर शेप में होते हैं. हाँ, प्रोपेलर इस तरीके से. ठीक है. सो दे आर अनस्टेबल. करेक्ट. तो इसके लिए वो ऐसे 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 शेप में. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट दीज टू. बेंजीन के ऊपर ये रिएक्शन होने की कोशिश कर रहा है. क्या पहली बात बताओ, क्या यहाँ से एफ बी आर माइनस आ सकता है या बी आर प्लस आ सकता है इधर से? नहीं सर. यहाँ से बी आर प्लस नहीं निकल सकता ना, तो नो रिएक्शन. नहीं. दैट्स इट. नो रिएक्शन. नेक्स्ट एनहाइड्रस Cl3. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख के करो. एनहाइड्रस Cl3 यहाँ से पहले निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. अब रिंग को अच्छे से देखो, 1 2 3 4 5 6 इधर क्लोज कर सकता हूँ ना मैं, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे रिंग क्लोज हो जाएगा. सो व्हाट डू वी गेट एज अ प्रोडक्ट? वी विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट हियर लाइक दिस, एंड इसके इस साइड पर हमारे पास और एक ग्रुप है इस तरीके से. ठीक है. सो दिस इज द प्रोडक्ट यू विल गेट. HF 0 डिग्रीज. HF के साथ मैंने बताया था कि कार्बोकेटन बनेगा, कार्बोकेटन विल गेट अटैच्ड. सो हियर फर्स्ट बेंजीन है और उसके ऊपर यहाँ पे कार्बोकेटन बन रहा है, ये इसको अटैच हो जाएगा. सो व्हाट डू आई गेट? दिस वन. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. Clear everyone? Right. HOCl1 equivalent. HOCl1 equivalent. यहाँ पे देखो बेटा, Cl प्लस बनता है और Cl प्लस किधर अटैच होता है? इधर. बिकॉज OH के साथ, इफ यू सी द रिएक्शन विथ OH हियर, करेक्ट, व्हेनेवर अगर आपको कंपैरिजन आया, देखो ये इंपॉर्टेंट केस है बेटा, अगर आपको कोई भी एडिशन आया CH2 पे एंड देन यू आर गेटिंग ब्रोमीन हियर एंड Cl प्लस है. अब Cl प्लस किसको ज्यादा फेवर करेगा? एडिशन ऑन दिस डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन? फेवरेबल ऑलवेज ऑन एडिशन ऑन डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये डीलोकलाइज्ड है. किस पे अटैच इजी हो सकता है? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर एवरीवन? सो एडिशन किधर होगा बेटा? लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड पे. although it is delocalized but it is not as delocalized as benzene. okay, so यहाँ पर आपको कार्बोकैटायन बन जाएगा, OH इधर, करेक्ट, एंड Cl इधर अटैच हो गया. अब देखो बेटा, कार्बोकैटायन अंदर रेजोनेंस करेगा ना, इधर से रेजोनेंस करेगा, सो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा. सो व्हाट डू आई गेट? यहाँ से डबल बॉन्ड इधर, Cl इधर, पॉजिटिव चार्ज विल बी हियर एंड OH इज हियर. अब ये पॉजिटिव चार्ज घूमते जाएगा और घूमते घूमते कहां पे रुकेगा? इट विल कम अक्रॉस हियर, डबल बॉन्ड Cl हियर एंड विल गेट डबल बॉन्ड OH प्लस, और यहां से आप H प्लस हटा दो तो आपको ये क्विनोन बनते हुए दिखेगा. सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. करेक्ट. एंड बिकॉज आई हैव गिवन वन इक्विवेलेंट, मैंने इसको रोका बेटा. अगर आपको वन इक्विवेलेंट नहीं और भी HCl प्रेजेंट होता तो ये फिर से H प्लस लेकर अपना एरोमेटिक रिंग बना लेता फिर. ठीक है.
सर HOCl के साथ तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है ना अल्कीन्स पे। क्या बेटा? HOCl के साथ नॉन क्लासिकल पे भी आपको अल्लेलिक या बेंजालिक पोजीशन पे है तो रेजोनेंस होगा। नॉन क्लासिकल पे अल्लेलिक या बेंजालिक होते हैं तो रेजोनेंस विल टेक प्लेस एंड यू विल हैव टू ऐड दिस। सर पर कार्बोकेटाइन तो फॉर्म ही नहीं होगा ना। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पर Cl है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये हो गया नॉन क्लासिकल, राइट। यस सर, यस सर। अभी जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा ना वो किधर, इधर ऐड नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल इधर ऐड हो जाएगा। हाँ Got it? Why? Because this pi bond will push and this chlorine will go. ठीक है, so think in lines of the classical carbocation only. Finally वही है ना, मतलब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अगर NU ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया तो फिर से आपको डबल बॉन्ड इधर आ गया। दिस इज व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट इज। ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चंस किए हमने, एल्कीन्स में आए हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में किया था। करेक्ट गाइस। देखो यहाँ से पूरे के पूरे फ्रीडेल क्राफ्ट से, अभी पूरे आई मीन सॉरी फ्रीडेल क्राफ्ट ईएस है, सॉरी कंप्लीट ईएस जो हमने किए वही सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है, करेक्ट। आपको फिर से एक बार करना है और लास्ट में यहाँ से जो थोड़े क्वेश्चंस है, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ये वाले बर्ज रिडक्शन है, ये वाला बर्ज रिडक्शन है, बस दिस कवर्स द एंटायर ईएस बेटा, करेक्ट। सो इसके ऊपर जेई में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, सारे राइट फ्रॉम 2001 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे मैंने इसमें कवर कर दिए। सो प्लीज कंप्लीट दिस शीट, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको कोई भी एग्जाम। सर ये जेई क्वेश्चंस है। जेई जैसे ही है, जहाँ पे जैसे जेई को बीच बीच में ऐड कर दिया, जैसे ये वाला ये जेई क्वेश्चन है 2017, ओके, ये 2015 ये वाला, करेक्ट, ये वाला अभी रिसेंट वाला क्वेश्चन है 20, ऐसे कहीं कहीं पे ऐड कर दिया। बाकी सारे केसेस जो रेगुलर केसेस है जो पुराने पूछे गए जेई। सो ये आप कंप्लीट करोगे। थोड़ा सा मुझे रस्टी लग रहे हो सब लोग, अभी थोड़ा रीडिंग करना बाकी है आपको एक बार, ओके। सर बाकी एरोमेटिक पढ़ना है। So please पढ़ो। I will upload the, I'll check the video and upload that tonight, the last session of it. So please read that and complete benzene. Don't keep that benzene pending at all, okay? Because fresh we will start with alkyl halides in the next class, okay? So alkyl halides includes mainly polyhalogens. Polyhalogens ही नहीं किया हमने। अल्केलाइड्स बाकी E1, E2, SN1, SN2 ये मैकेनिज्म सबको आते हैं, हम लोग एक बार ब्रश अप करके आगे बढ़ जाएंगे। देन विल फोकस मोस्टली ऑन पॉलीहैलोजेंस। सो पॉलीहैलोजेंस हो जाता है तो मेजर पार्ट वी विल कवर अप एंड देन अल्कोहल्स, ईथर्स, फिनॉल्स बहुत कम बचता है, ओके। हाँ, अबाउट टुमारोज टेस्ट आई विल बी अपलोड